Thank you so much, Kajal, and thank you so much, Dr. Kantesh, for giving us the forum. Dr. Abhishek Yadav for giving us the opportunity to be in front of all the esteemed doctors today. Dr. Lokesh Agarwalji, Dr. Sunil Kumar Garsa, Dr. Ramdev Chaudhary, the different guests of honor, esteemed legal experts and panelists. As a firm, we are very grateful for all the services that the doctor community provides to the general public. We are in the middle of a pandemic, and your sacrifice and your contribution is absolutely unparalleled, with any other profession. So first of all, I feel extremely privileged to be of any service to this community. So thank you very much. Today we want to discuss two topics, right? And जैसे कि मेरे से पहले जो panelists थे उन्होंने व्यक्त किए अपने विचार कि डॉक्टर्स के ऊपर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, नंबर वन. नंबर टू, केसेस किस तरह के हैं, राइट? हम केसेस की डिटेल डिस्कस करें. और नंबर थ्री, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या रोल है और उसके लिए क्या डॉक्टर लायबल है और उससे डॉक्टर्स के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है. सो ये जो तीनों टॉपिक्स के बारे में पैनलिस्ट ने ऑलरेडी एक भूमिका बांध दी है. मेरा काम अभी नेक्स्ट 20 मिनट में यही है कि मैं इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूं, राइट? कि किस तरह से ट्रेंड चल रहा है ऑन मेडिको लीगल केसेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सीपीए. फर्स्ट थिंग दैट जो हमें समझना है कि मेडिको लीगल केसेस बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट? मेनी पैनलिस्ट सेड कि जितना ज्यादा एकेडमिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट कंपैरेबल अपनी प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज्यादा अनिवार्य हो गया. 400% राइज है लॉसूट्स में रिगार्डिंग मेडिकल नेग्लिजेंस अलोन, राइट? और ये सर्वे 2015 का है. उसके बाद से और रैपिडली बढ़ रहा है. समवन स्पोक अबाउट हाउ गूगल इज इनेबलिंग दिस, राइट? So if you go a little deeper, you will find that more than 1/4 of the cases are only because patient expectations were not fulfilled. इसका मतलब क्या कि पेशेंट ने अगर गूगल पे सर्च कर लिया, उनके हिसाब से कुछ एक सर्टेन प्रोटोकॉल होना चाहिए और डॉक्टर्स ने वो प्रोटोकॉल मीट नहीं किया, सो द पेशेंट्स फील अग्रीव्ड एंड दे आल्सो फील एंटाइटल्ड टू गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट डॉक्टर्स, राइट? बहुत बार ये केसेस सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज पेशेंट की एंजाइटी है या उनकी नॉलेज लिमिटेड है, विच इज ऑब्वियस, राइट? बट दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, 85% सर्वे के हिसाब से 85% जो लीगल कॉस्ट है दैट डॉक्टर्स आर बेयरिंग ऑन देयर ओन, राइट? अ लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन इज उनको अवेयरनेस नहीं है. उसके अलावा दे आर नॉट इंश्योर्ड. जब वो इंश्योर्ड नहीं होते और अवेयरनेस नहीं होती, दोनों चीजों के कारण वो लीगल लायबिलिटीज जो जितनी ज्यादा बढ़ रही है वो डॉक्टर्स के ऊपर पड़ रही है, ना कि ऑन प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, राइट? एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट दैट these cases are not going away, right? These cases are only increasing. Sometime later we will also talk about कि कैसे CPA के ऊपर काफी challenges medical forums ने किया है, but still how courts have decided against it. ये एक एग्जाम्पल है बाय स्पेशलिटी. एक सर्वे हुआ था कि किस तरह की स्पेशलिटी पे ज्यादा केसेस आ रहे हैं. So the number one case which is there prevalent is on the gynecology department, right? 26% share जो है of medical legal cases belong to this. Thereafter followed by orthopedic, general surgery, general medicine, ophthalmology, and it goes in that order. And अगर आप देखेंगे तो जो मेडिको ट्रीटमेंट होती हैं वो भी कुछ इसी तरह से होती हैं, राइट? जो हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है वो कम और कम है, राइट? इन द ओवरऑल प्रोपोर्शन. द ब्रॉडर message here is that no specialty is spared. हर स्पेशलिटी में मेडिको लीगल केसेस आज के दिन में प्रेवलेंट है. अब आप इसमें देखिए कि जो केसेस हुई हैं उनका आउटकम क्या रहा है.
सो 30% केसेस ऐसे हैं जहां पे डॉक्टर की नेग्लिजेंस प्रूव हुई है, बट ऐसे भी 70% के करीबन केसेस हैं जहां पे डॉक्टर की नेग्लिजेंस प्रूव नहीं हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर को वो पूरा हरासमेंट और पूरी अपनी डिफेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ नहीं करनी पड़ती है। सो फॉर द इंटायर 100% ऑफ केसेस डॉक्टर्स को अपने आप को एक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, एक लॉयर फीस पे करनी है। उसके अंदर अगर 30% केसेस में नेग्लिजेंस प्रूव होती है तो उनको कॉम्पेंसेशन भी देना है। सो ये है कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर डॉक्टर्स आज के दिन में ऑपरेट कर रहे हैं। बट द बिगर मैसेज हियर इज 70% केसेस ऐसे हैं जो डिसमिस कर दिए जाते हैं, बट और 30% केसेस में नेग्लिजेंस प्रूव होती है। नाउ at the opening, and this is where I want to spend most of the time, right, in terms of discussing actual cases. मैंने दो केसेस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो कि दोनों सुप्रीम कोर्ट लेवल तक चले गए हैं, और both these cases have established a landmark judgment. The first cases, many of you would be familiar, is the Anuradha Saha case. What is the context of the case? ये केस है 1998 का। Anuradha Saha, right, wife of another, a doctor, right, Dr. Kunal Saha. Dr. Kunal Saha is a doctor himself and also an NRI. Dr. Anuradha Saha को एक skin allergy हुई because of a reaction, because of some unknown reason, एक acute उनको allergy हुई, because of which इनकी skin में rashes आ गए। She went and saw a doctor, right? The doctor prescribed a medicine to her, which was generally meant for chronic cases, right? It was not typical for this kind of cases. Not just that, the dosage of that medicine was substantially more than the typical dose that was applied. Now, because of that, she had a reaction to the medicine, right? And ultimately she died. Now, if you think about it, what did Dr. Kunal Saha did? He was an NRI, but he made his life's mission कि मेरे को इस चीज को एक criminally and civilly, right, मेरे को डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन करनी है। He fought for 15 years. Just imagine the duration. He went to the local medical council. They dismissed the case. He went to consumer court. He kept on losing till the time he went to the Supreme Court, which then expanded the definition of medical negligence, and I'll come to that in a bit. After which he got a compensation of 5.96 crores. This is one of the highest settlements awarded against a doctor for medical negligence, right? And this is a case where not just the doctor but the hospital was also penalized, right? In fact, in terms of the compensation, the doctors had to pay only 10 lakh share each along with interest. The large part of the share was actually paid by the hospital, right? What did the Supreme Court say? When, as the cases were going, the Supreme Court redefined medical negligence, right? It said, going forward, medical negligence would include overdose of medicines. इस चीज के ऊपर पहले ambiguity थी. It include that if you don't inform your patient about side effects, it is part of medical negligence. It said that agar there is a disease which has high mortality rate and you don't take extra care, then that is a medical negligence. Hospitals not providing fundamental amenities to patients is considered medical negligence. In this particular case, what happened was, apart from the medicine prescription, what the court took cognizance of was that IV fluids were not given to the patient. It further said that जो एक basic nutritional support होना चाहिए था for the patient, that was not prescribed by the doctor and not given by the hospital. So when you see all this put together, the doctor and the hospital both were held medical negligent because of wrong prescription. So that is one case, and it has been quite a landmark case which junior courts now keep on referring to. A second case, Master Rishabh Sharma. This is closer to home. ये Delhi का case है for Maharaja Agreshan Hospital. Now, in this case, who is the claimant?
The father of Master Rishabh Sharma was a security guard. This case also went on for 15 years, right? And the petitioner kept on losing in junior forums till the time it went to the highest forum, and then she won an award. Now, if you notice the commonality in both the cases, right? Cases run long in India. 15 years is a long time, right? And for all this while, the doctor has to pay for the lawyer fee to defend themselves, number one. Number two, if you see the spectrum of strata of society जहां से cases आ रहे हैं, on one end एक NRI है जो कि केस कर रहा है, on the other end there is a security guards family जो कि केस कर रहे हैं. So there is a very large spectrum of people. It's a complete spectrum which is being adopted today in terms of filing medical negligence case. Now what happened in this case? This was a premature baby that was born at 32 weeks, and the baby was in hospital for several weeks. 8 months after the baby was discharged, they had a lot of follow-up consultations with the concerned doctors. It was identified that the baby had retinopathy issue, right? And because of which finally the baby became blind. Now, what did the court did? They applied a Bolen test and identified that the hospital and the doctor should have prescribed a retinopathy or prematurity test, which was not done by the hospital and the doctor, right? Because of which the hospital and doctors are liable. In this case, what was specifically underlined by the Supreme Court, that hospital is vicariously liable for acts of doctor affiliated to them, right? Well, in the previous case, there was a direct negligence of the hospital because they had not given the nutritional support. In this case, there was no specific fault of the hospital, right? Because the hospital was made vicariously liable. अगर आपके पास जो डॉक्टर है उन्होंने गलती की है, तो पेशेंट जो आपके पास आ रहा है वो आपकी रेपुटेशन की वजह से आ रहा है, इसलिए आप भी liable, right? And further, what the court did here is that to ascertain acts of negligence, they also prescribed a few steps. They said that for any medical professional, it is their legal duty to exercise due care. In this case, it was not done because आपने test prescribe नहीं किया. You failed to inform the patient of the risk involved. So अगर premature baby होता है, so it is common कि retinopathy की issue हो सकती हैं, तो आपको investigate करना चाहिए. The patient suffered damage as a consequence of the undisclosed risk. आपने risk नहीं बताया, इसलिए वो damage हुआ. अगर वो risk disclose हो जाता, तो patient could have avoided the injury. And the most important thing is, because of the breach of said duty, there is an actionable claim of negligence, right? That's how the court has defined how do you ascertain acts of negligence, right? Now you would notice again the other thing is the kind of cases which are entertained by the courts. On one end, आपने medicine overdose prescribe की, गलत medicine prescribe की, उसकी वजह से आप negligent हुए, और इस particular case में आपने सही diagnostic prescribe नहीं की. That is the reason why the hospital and the doctors are held negligible. So again, the spectrum of cases which the court is entertaining is quite wide. Now, because of such situations, professional indemnity insurance steps in, right? It helps you protect yourself for both the cost, lawyer fee bhi or compensation awarded by the court in case you are held medically negligent, right? So इसके अंदर आपके unqualified staff और technicians की वजह से भी जो गलतियां होती हैं वो भी फिर cover होती हैं. The main issue here is that once you have a professional indemnity insurance, जो जितनी हमने anxiety webinar के शुरू में व्यक्त की, वो काफी हद तक आपने insurance, right? By paying a small premium every year, you have taken off the burden कि अगर कोई केस मेरे ऊपर होता है, then the insurance company takes care of it rather than me being running pillar to post, right?
एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्रॉम द SecureNow पॉलिसी दैट वी ऑफर, आज के कार्यक्रम से हो सॉरी मैं आई थिंक थोड़ी सी आवाज आ रही थी, दैट्स व्हाई म्यूटेड एवरीवन. सो one of the most important things is SecureNow ने जो प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइज की है, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम आपको कोई लीगल फीस का सब्सक्रिप्शन नहीं पे करना, राइट? बिकॉज हमारी पॉलिसी के अंदर लॉयर कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सो आपको कोई 3 साल 5 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना कि यार अगर मेरे पास कोई डॉक्टर का केस आता है तो किसी डॉक्टर के ऊपर केस आता है तो लॉयर फी के लिए मेरे को लीगल सब्सक्रिप्शन लेना, ऐसा नहीं करना. आपके प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस के अंदर ही दोनों चीज कवर्ड है. Now we'll come to the context of CPA. The first part is how did how did it happen that medical negligence case got started covering in CPA. Now this is a case of 1995. This is a landmark case where the Indian Medical Association versus VP Santha, right, in Supreme Court, where the Supreme Court decided that medical negligence case should be part of CPA 1986, right? And after which all the it opened the doors for the courts to entertain medical negligence cases. Now जैसे शुरू में बताया गया, जब CPA 2019 आया, डॉक्टर यादव ने बताया, तो हेल्थ केयर सर्विस को मिनिस्टर ने specifically drop kiya, not to cover under CPA 2019. But if you note the speech of the minister, he went on to say that to pass the bill and to avoid any controversy, to avoid any delay, I am dropping healthcare service as a term. What was not done was healthcare as a service was not specifically excluded from CPA 2019. So आपने उसको ड्रॉप कर दिया तो एक जनरल मैसेज चला गया कि हो सकता है अब डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सर्विस इज नॉट कवर अंडर CPA 2019, बट आपने उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया, तो इसलिए फाइनलिटी नहीं आई कि कंज्यूमर कोर्ट्स इन केसेस को एंटरटेन कर सकते हैं कि नहीं. Now what happened is that a lot of different forums of doctors have gone to courts to stop this barrage of cases against doctor in consumer courts. Now a very recent case, as recent as November 2021, not even 6 months old, a doctor association went to Bombay High Court to say that doctors should not be considered under CPA 2019 because of the said dropping of healthcare from CPA 2019. But the court ruled that just the mere dropping of healthcare term does not mean an exclusion from the definition of the term service, right? And it said that healthcare as a service will continue to be governed by CPA 2019. Not just that, it imposed costs on the appellant, 50,000 rupees cost more as a punitive damage कि आप इस तरह के cases हमारे पास नहीं लेकर आओगे, right? So given this context, right, today if you see from a legal precedent, it is well established that healthcare negligence, medical negligence can be entertained by consumer courts, especially under CPA 2019. Now, if you go one step further, between CPA 2019 and the earlier versions, there has been a lot of changes, right, which makes things more favorable for the consumer. I think there was a comment also made by one of the panelists to this extent on chat. Now, which are these points? First, if you lose a case in the lower court and if you have to go to the higher court, right, but you have to deposit the compensation awarded by the court with the court. Pehle that was capped at 25,000 rupees. Now without the capping, it says 50% of the compensation awarded by the court has to be deposited by the negligent doctor or the hospital. Second, the level of jurisdiction has been increased substantially, right? Pehle district court could handle only cases up to 20 lakhs. Now the district court can handle up to cases of 1 crore.
right? That is one big difference. And the second big difference within this is that पहले वैल्यू ऑफ क्लेम के ऊपर जुरिस्डिक्शन माना जाता था, अब वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड के ऊपर माना जाता है. सो आपने कितने रुपए की सर्विस दी उसके हिसाब से जुरिस्डिक्शन माना जाएगा, ना कि आप कितने रुपए का क्लेम कर रहे हो इसकी वजह से माना जाएगा. तो कोई भी आप मैक्सिमम आप जो हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं वो सारी की सारी 1 करोड़ रुपए के नीचे आती हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एन इंडिविजुअल टू गो एंड फाइल अ केस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज गारंटीड, चाहे वो कितने रुपए का भी क्लेम कर रहा हो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है, बिकॉज जो सर्विस उसको मिली हुई है, अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर ने 1000 रुपए की फीस चार्ज की है, तो 1000 रुपया इज द वैल्यू विच द कोर्ट विल सी टू डिसाइड जुरिस्डिक्शन. नाउ इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले अगर आप बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे थे तो आपको स्टेट या नेशनल फोरम में जाना पड़ता था, राइट? तो दैट वुड हैव बिकम डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर. बट अब वो और ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि वो कोई भी केस अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके फाइल कर सकता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सर्विस विल बी लेस देन 1 करोड़. Another point is that CPA 2019 now has a specific provision for mediation cell कि दोनों पार्टी के बीच में अगर सुलह हो जाए आउट ऑफ कोर्ट तो वो CPA 2019 मैंडेट करता है. तो इसके लिए आपकी पॉलिसी में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कवर होना अनिवार्य है. अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का प्रोविजन है आपकी पॉलिसी में तो ये वाले एस्पेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट विच इज very very important point is that what is the territorial jurisdiction, right? So अगर आप जयपुर में हैं, आप राजस्थान में हैं और आपका पेशेंट केरल से आपके पास आपको ट्रीटमेंट करने के लिए आता है, तो पेशेंट केस कहां फाइल कर सकता है? एज पर CPA 2019 जहां पे पेशेंट रहता है वो केस वहां फाइल कर सकता है. तो अगर केरल का पेशेंट आपसे मिलने आया तो वो केरल में फाइल कर सकता है. अगर दिल्ली का पेशेंट आपसे राजस्थान में ट्रीटमेंट कराता है तो वो दिल्ली में फिर केस फाइल कर सकता है. तो इसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है कि जो आपका नेटवर्क ऑफ लॉयर्स है वो वाइड होना चाहिए. अगर हम राजस्थान की स्पेसिफिकली बात करें तो अगर आप उदयपुर में बैठे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे पेशेंट उदयपुर से ही हैं. कुछ पेशेंट आपके हो सकता है जोधपुर से आ रहे हो, कुछ जयपुर से आ रहे हो, तो वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पे फाइल करेंगे, ना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में फाइल करेंगे, राइट? सो आपके पास ये नेटवर्क होना चाहिए कि मैं वहां पे लॉयर अपॉइंट करूं. सो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर लेती है, बिकॉज आपके पास यू कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर इन द स्टेट. Another aspect that is specifically relevant for doctors when you think about CPA 2019 is what is unfair trade practice, right? Now CPA 2019 में अगर आपने unfair trade practice किया तो आपके खिलाफ केस होना बहुत इजी हो जाता है. This is over and above medical negligence. For example, आपने प्रॉपर कैश मेमो और बिल नहीं जनरेट किया, आपने एक प्रॉपर कैश मेमो नहीं दिया आपके पेशेंट को, तो वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है. अगर आपने पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके परमिशन के बिना किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. तो इसके लिए हमारी पॉलिसी में एक हमने स्पेसिफिक प्रोविजन लिया है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. और ये पास्ट में केसेस ऐसे हो चुके हैं जहां पे डॉक्टर ने वाइफ की मेडिकल हिस्ट्री उसको बता दी है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया. तो वाइफ मेड अ केस अगेंस्ट द डॉक्टर कि आपने मेरी इंफॉर्मेशन बिना मेरी परमिशन के आपने हस्बैंड को कैसे बता दी, राइट? सो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स ऐसे रखने हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं चली जाए. अगर जाती है तो आप एक एक्सपोज हो जाते हैं टुवर्ड्स this kind of a unfair trade practice. Now, if you think about all the provisions, right, which are there in CPA 2019, बहुत ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली है. आप ई कंप्लेंट फाइलिंग कर सकते हो, राइट? मैंने कहा आप अलग अलग जुरिस्डिक्शन में फाइल कर सकते हो. आपकी कोर्ट फीस कम हो गई है, राइट? कंज्यूमर कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू इट at their own order. So अगर उन्होंने आपके फेवर में भी फाइल किया, अगर वो फिर से अपील करते हैं, सो वो एक पूरा चक्र चलता रहेगा. सो
overall CPA 2019 is far more favorable for the consumer. I would conclude with in fact a High Court observation which says and which echoes some of the sentiments that was expressed earlier, that courts also have now observed that an unscrupulous section of people, right, are using the slightest opportunity to sue doctors and hospitals, right? So ये कर्नाटका हाई कोर्ट की observation है, right, which is as recent as 14 January 2022, right? So net message iska ye hai, as practitioners we have to be a lot more careful than what we were in the past.